Hello everyone, welcome back to your favorite channel Studlins, which adds excellence to your learning. In our previous lecture, we have seen the four built-in data types of Python, namely lists, tuples, dictionary and set. And at last, we've also seen the main differences between all the four terms. We have seen that Python is called the OOPS language, which stands for Object-Oriented Programming Language. So, in Python, we create a class, and for each class, we initialize an object. So let's understand it by a real-life example. In our surroundings, we have different types of animals. So, animals here are the class, and the dogs, cats, cows, and all the other types are the objects of that class. Let's understand it much more clearly that a dog is also the blueprint of an animal, and at the same time, a cat is also the blueprint of the animal. These two are unique from each other, but they do share some common properties in them. So here, technically, we can understand that a class is a user-defined blueprint of the object being created. In layman terms, we can say that the object is a physical existence of the class. Each object is associated with three main terms, namely state, behavior, and identity. So let's see it with our example which we have seen earlier. State means the property of the object. Like each dog belongs to a certain breed, they have different color and age too. The second is the behavior, which means the response of the object. Like we can see that each dog can bark, sleep, run and do much more. At last is the name. Like we have a breed, the pug dog, which means every dog has a different name and they are unique from each other. So technically, also in class, we have different functions like show, read and many more. Each function has their own behavior. As we can see on the screen, that we have created a class dog, and inside it, we've initiated variables. So this type of initialization is called class variable initialization. But here, in another example, we have seen that we have initialized the same variable with the help of the init function. So this is called instance variable initialization. About the init function and the self method, we will see to it in our live coding sessions. So overall, we can say that like we have state, behavior and identity being associated with the German Shepherd, like its breed, color, age and many more. In the same manner, a class has different functions like get and read. Of each function has their own behavior, and a class can have number of objects having different names in it. So now let's create a first ever class and see how exactly it works and the values are being initialized within. Now let's practically apply whatever we have learned in this part in our live coding session. So let's move to the live coding session. Are you enjoying the course so far? So to keep on enjoying, please hit the subscribe button for more updates and this type of interesting videos. So welcome back students again to this live window. तो अभी तक हमने अपनी 2 मॉड्यूल कंप्लीट कर ली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे. सो अब हमारा तीसरा मॉड्यूल शुरू हो चुका है जहाँ पे कि हम देखेंगे दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट पाइथन इज कॉल्ड द oops प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो oops का मतलब क्या होता है? वी आर टेलिंग मीन द फुल फॉर्म ऑफ oops इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज.
तो जैसा कि हमने अपने एनिमेशन में देखा है दैट हाउ ऑब्जेक्ट दैट व्हाट ऑब्जेक्ट इज व्हाट इज एक्चुअली अ क्लास लाइक क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट गिव्स द physical existence to the class. Like we have taken the example of the dogs, like the dog is an object of the class animal, and inside that also we have seen that there are three terms which are being associated with an object, that is state, behavior and identity. Then we have seen what is state actually, then basically what is the behavior we are telling about. Then we have also seen that what is identity actually works with the objects. So now in this live coding we are going to see some of the points. Like in this session we will see how to create a class. Like ऐसा तो अभी तक हमने जाना है that what actually a class is, but technically how we can create a class in our Python editor we will see here. Then we have also seen that each class is associated with an object, so we will see that how we can create an object and initialize it with the help of some method we will see. Then we will see about the class and the instance variable. So what is actually an instance and the class variable? हमने animation में देखा है already that what is actually an instance and a class variable, but we will see practically that what actually they are. Then we will be seeing about the functions in the class, that how we can define the function, as we have seen that we have the data members as well as member function inside the class. Then we will also see that how we can access the data and the member function of the class with the help of the object which we will create. Then after that, at last we will see about the two words, that is self and init. So let's start our journey. So basically we are going to create a class of dogs. So I have defined the keyword class. Then I have written the name of the class. So as I have written, so what actually this two word is doing, so basically this is a class keyword which tells that we are going to create a class whose name is dog. So I have started the colon here. So now I will press here enter, and I will define here one variable. Inside that variable I will define a variable mammal, because mammal के अंदर ही animals आते हैं. So I will give it its name mammal. I will initialize its name with the help of mammal. Then यहाँ पे हमने already एक variable define कर लिया that we have a variable mammal. Inside that we have kept the value animal. Now I'll be defining a function. So before defining a function, each dog is associated with some breed, color or age. So I'll be writing here breed. Breed I can write to be German Shepherd. German Shepherd you all would be knowing. Then after that I will be writing here age. So age I will mention here 7 years. Then after that I will be writing its color. So its color would be black. So I have defined this. Now these are the data variables which are being associated with the class dog. So now I will define a function to access these values. So so as we have seen in our function chapter, that how to define a function, we are using the keyword def, then the name of the function. So मुझे यहाँ details दिखाना है, तो I will be writing the name of the function to be show details. जब भी हम फंक्शन का नाम लिखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वॉट एवर द नेम ऑफ द फंक्शन, दैट मस्ट बी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम ओनली, दैट व्हाट पर्पस और व्हाट एक्चुअली इट इज वर्किंग. सो यहाँ पे अगर कोई भी अगर ये फंक्शन देखेगा सो डिटेल्स, तो उससे ये बात पता चल जाएगी, अच्छा ये ऐसा फंक्शन है जो मुझे कुछ डिटेल्स दिखाना चाह रहा है. सो इनसाइड दैट आई विल बी राइटिंग हियर सेल्फ. सो मैं यहाँ सेल्फ क्यों लिख रहा हूँ, व्हाट एक्चुअली सेल्फ इज, आई विल बी टेलिंग इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर. सो नाउ आई विल राइट हियर प्रिंट, क्योंकि हमने देखा था कि किसी भी मैसेज को अगर हमें अपने आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है तो हमें प्रिंट मेथड का यूज करना पड़ता है. सो आई विल बी राइटिंग हियर द mammal is a, then after that I will present this one, then I will use self dot I will write here mammal, the variable which I have defined. Now what I will be doing, I will be copying this line because I don't want to write it again and again, but to you I suggest you to please write it so that your syntax and all that will also be practiced. So now now I have seen that it is a dog, so I'll write here the dog breed is.
So I'll write here the dog breed is, then I'll change here. I'll change here the variable name to be breed because I want to access the breed which I have mentioned. Then after that I will write here the dog age is. So here I will write here age. After that I will write here the dog color is. So I'll write here the keyword color. So I'll write I mean sorry, I will not write the word. I will not write the keyword color. I will write the variable which I have defined here, color. Inside that I have value. So now I don't require this line. So as I'll press here enter, I can see that my class is created and it is not showing me any error, because if it had been अगर इसमें कोई एरर होता तो हमें यहाँ रेड कलर का मैसेज शो हो जाता जो हमें सिंटैक्स एरर पे शो होता है. अब चूंकि हमने क्लास बना दिया तो हम ब्लूप्रिंट से एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं. हम ब्लूप्रिंट से ये कहना चाहते हैं कि जब भी एक डॉग क्लास बनी है उसके अंदर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं. उन 4 वेरिएबल्स में हमने वैल्यू स्टोर की है. हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम मेंबर फंक्शन कह रहे हैं यहाँ, जो कि शो डिटेल्स नाम का है, जिससे कि हमें सारे डिटेल्स एक्सेस होंगे वॉट एवर वी हैव डिफाइंड इनसाइड दैट क्लास और वॉट एवर वेरिएबल वी हैव डिफाइंड इनसाइड द क्लास. सो एक्चुअली दिस होल इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द डॉग. लेकिन अभी इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है टिल द टाइम वी आर नॉट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. सो आई विल राइट हियर लाइक लेट मी राइट हियर टॉमी. टॉमी इज अ फेमस नेम ऑफ डॉग्स. So I'll write here dog and then I'll put this one. यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग क्लास का और मैंने ये कहा कि जो नाम होगा ऑब्जेक्ट का वो टॉमी होगा and then class here dog and then I've used this parenthesis. As I'll press here enter, it is not showing me any error because I have followed the proper syntax here. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पूरे क्लास को एक फिजिकल एक्सिस्टेंस दे चुका है. मीन्स इफ आई वांट टू एक्सेस एनीथिंग ऑफ दिस क्लास आई कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ टॉमी, बिकॉज हमने इंटरप्रेटर को ये बता रखा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड है विद द हेल्प ऑफ विद द डॉग क्लास. सो अब हमें डिटेल्स देखना है तो आई विल बी राइटिंग हियर टॉमी, देन आई विल यूज द डॉट ऑपरेटर. एक्चुअली ये जो डॉट यूज किया है, जैसे देखिए जैसे हमने यहाँ पे डॉट यूज किया, यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया कि आपको कौन सा डेटा एक्सेस करना है इस क्लास का. लाइक वी हैव द एज, ब्रीड, कलर, मैमल एंड शो डिटेल. तो आप यहाँ देख सकते हैं वी हैव ऑल दैट हियर, दैट वी हैव द मैमल हियर, वी हैव ब्रीड, देन वी हैव एज, देन वी हैव कलर एंड देन वी हैव द शो डिटेल. बट अलग अलग एक्सेस भी हम कर सकते हैं और वी कैन डायरेक्टली एक्सेस ऑल द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ शो डिटेल्स. आई विल शो यू बोथ. So I'll write here show details. Always while calling the function, always see that you are mentioning the same name as you have mentioned here, because it will show me error. Let me show you how it is going to show me error. Like I have mentioned here show details, but here I have mentioned the name to be details. As I'll press here enter, it is going to say me that dog has no attribute show detail. तो एट्रीब्यूट मतलब होता है क्या, एट्रीब्यूट मीन्स होता है या तो डेटा मेंबर होगा या तो फंक्शन होगा. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा टॉमी डॉट ब्रीड में मैंने एक ही लिखा, तो एज आई प्रेस हियर एंटर आई कैन सी अगेन द सेम एरर मैसेज दैट नो एट्रीब्यूट. सो एट्रीब्यूट मीन्स द डेटा मेंबर और द मेंबर फंक्शन विच इज देयर इनसाइड दिस क्लास. सो नाउ इट्स टाइम टू रिमूव दिस एरर. आई विल राइट हियर सो डिटेल्स. Now if I'll press here enter, I am going to see that the mammal is an animal, the dog breed is German Shepherd, the dog age is 7 years and the dog color is black. So actually यहाँ हुआ क्या, जैसे ही हमने show detail function call किया with the help of this object which we have created of this here, so we have used the dot operator to access the function which we have defined inside the class. सो एक्चुअली ये सेल्फ कीवर्ड क्या कर रहा है यहाँ पे, तो जो मेनली जो सेल्फ कीवर्ड का जो काम होता है, द सेल्फ पैरामीटर इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड इट इज यूज्ड टू एक्सेस द वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू दैट क्लास. मतलब हमें इन सारे वेरिएबल्स को एक्सेस करना था. सो टू एक्सेस दैट वेरिएबल इट इज बेसिकली लाइक अ रेफरेंस. ये रेफरेंस की तरह काम कर रहा है जो कि हमें ये बता रहा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर एक्सेसिंग दीज ऑल वेरिएबल्स विच इज द पार्ट ऑफ दिस क्लास डॉग.
कई बार ऐसा आप ऐसा देखेंगे कि हर जगह सेल्फ ही डिफाइन होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें सेल्फ ही डिफाइन करना है. वी कैन डिफाइन एनीथिंग बट वी नीड टू पास for the reference purpose. I'll show you also that in place of self I'm defining anything else but I can access the values also. So अब हम जैसे हमने देख लिया, जैसे हमने पहला पॉइंट देख लिया हाउ टू क्रिएट अ क्लास, देन हमने ये देखा हाउ टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, देन हमने ये भी अब हम देखेंगे व्हाट इज क्लास एंड द इंस्टेंस वेरिएबल. सो बेसिकली क्लास वेरिएबल क्या होता है, वॉट एवर वेरिएबल विच इज इनिशियलाइज्ड इनसाइड द क्लास. Like here we can see that the mammal is mammal, breed, age and color. These all are the variables of the class and we are directly initializing them. So these are called the class variables. So now what is instance variable? So I'm again going to define the same class. So I will not be writing this code again, but I suggest you to write this code, because it will give you a hands-on practice. So in place of writing this breed, age and color, what I will be doing actually, I'll be using a function that is init. So basically what is init, I will tell you just now that what is actually init. Inside init I have passed here self, then inside that I have passed the variables which I want to like initialize. Then I'll pass here color. I'll press here this block of the code will the block of the init function will start. So as this will start, I will write here self dot breed equal to breed. तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने ये बोला कि ये एक रेफरेंस पास हुई सेल्फ, उसने ये बोला कि ये जो ब्रीड का जो भी वैल्यू हम अभी पास करेंगे दैट मस्ट बी असाइन टू दिस वेरिएबल ब्रीड. वी कैन डू द सेम फॉर द अदर वेरिएबल अदर टू वेरिएबल्स ऑल्सो. सो आई विल राइट हेयर लाइक एज and I will give here also age. The same I will do for the color also. So I will define here color. So I have defined these values. So now I want to access the same with the help of showDetail function. So I need to define this function. As I'll press here enter, I'm not going to see any error because I have followed the proper syntax. Now what I'll be doing, I'll be making the object once again, but now this time I'll be passing the value inside the dog while making the object inside this parenthesis which we haven't done here. I'll be telling you why we are doing this. So inside that I'll again mention the same here German Shepherd. I'll mention here German Shepherd. After that I'll mention the age to be 7 years, and after that the color I'll be mentioning the same to be black. Now what happens, as I have pressed here enter, तो बेसिकली init फंक्शन क्या करता है, init फंक्शन इज लाइक अ कंस्ट्रक्टर. तो अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो हम कई बार क्या होता है कि जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं एक्चुअली, तो हम चाहते हैं कि कुछ वेरिएबल्स जो क्लास के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जैसे ये वेरिएबल्स हैं ब्रीड, एज एंड कलर, वो एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट ही डिफाइन हो जाएं. सो हमने इसीलिए ये दो आर्गुमेंट्स पास किए हैं. अगर हम यहाँ पे ये तीन आर्गुमेंट्स पास नहीं करेंगे तो इट विल गिव अस द एरर दैट आर्गुमेंट इज मिसिंग, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट I need to pass the breed, age and the color variables here. So now I have done that. Now if I will access the value with the same that show details, I am going to get the same output here as I was getting here. The same I am going to get here, but the main difference is that this time these variables are being initialized with the help of init function, which is the constructor one, and we have passed the value at the time of object initialization. But here what we have done, we have already initialized the variables inside the class and we have directly created an object and we have called the showDetail function. So these variables which are being initialized with the help of the init function is what we call as instance variable. So again I am repeating,
whatever variable which is already initialized directly inside the class is called the class variable, and whatever variables which we initialize with the help of the init function while creating the object is called the instance variable. So हमने अपना ये भी क्वेश्चन देख लिया कि what is self and the init function is working like a constructor which is initializing the variables data at the time of object creation. तो जैसा कि इस लाइव कोडिंग को मैं बंद करने से पहले आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि मैंने कहा था कि वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज द सेल्फ ओनली हियर. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, in place of self I'll be writing here ABC, but I need to change here also because I need to tell that this ABC is now working as a reference variable here actually. So now I'll press here enter. Now I'll change here also ABC, and after that the same I'm going to do it here ABC. ऐसा बात नहीं, वहाँ पे सेल्फ और ABC दोनों रख सकते हैं, but for your convenience I'm writing it here ABC. I'll change here also ABC, then the same I'll be doing here ABC, and here also I'll be doing ABC. As I will press here enter, so it is telling a syntax here, oh unexpected indent, sorry I missed that. So you need to give a proper check on all this, that you are not required that you are not supposed to leave extra indentation because Python interpreter will generate an error. So now this time my whole class is actually error free. So now I'll create the same object as I have done here. So I'll write here Tommy. Inside Tommy I will pass the objects to be a German Shepherd. Then after that I'll be passing here 7 years. Then after that I'll be passing here like color to be black only. Now if I'll press here enter, and now this time if I'll access the same function Tommy dot show details, so I'm going to get the same output. तो हमने ये myth यहाँ से remove कर दिया कि हमें self keyword ही use करना है. We can use the ABC or any keyword, any variable here, but we need to use this because this will work as a reference for the variables which are being initialized and the variables or the value which we want to access. So overall हमने क्या देखा कि how to create a class inside a Python. Then we have seen that after that हमने ये देखा कि हमें कैसे एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है और कैसे विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. फिर हमने ये भी देखा कि अगर हम इनिट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, सो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन or the initialization we need to pass the value which we want to initialize at the time of object creation, और फिर हमने same show detail से उसकी वैल्यू को एक्सेस किया. फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड ही सेल्फ वेरिएबल ही यूज़ करें. हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ यूज़ करना बिकॉज दिस वेरिएबल विल वर्क एज अ रेफरेंस फॉर द वेरिएबल्स विच आर बीइंग प्रेजेंट इनसाइड द क्लास. फिर हमने उसके बाद फिर हमने डिफरेंस देखा कि एक्चुअली व्हाट इज सेल्फ एंड द इनिट की इनिट में डिफरेंस क्या है. फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि व्हाट इज एक्चुअली ए क्लास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड द इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन व्हिच वी हैव सीन इन दिस टू पार्ट. So this is all for this live coding. I hope you have enjoyed this, and I request you to create different type of class and assign different functions to them. You can also define a function to read the value. So I request you to do the same and have a good practice on creating the class and objects. So this was all for this live coding window. Congratulations on completing this concept. We will get back to you with some more interesting concepts in the upcoming video. Till then, take care and bye-bye. So to go through the whole ISO certified course, stay tuned. We are coming soon with this. And do not forget to hit the subscribe button to never miss an update on your favorite channel, Studlin.